प्रैक्टिस करना है ड्राइंग पे, देखिए यहाँ पे सिंपल ये इजी ड्राइंग दी गई है आपको। ओके, यहाँ पे देखिए इसका आइसोमेट्रिक व्यू एंड देन इसका टॉप व्यू और साइड व्यू यहाँ ये गिवन है। देन यहाँ देखिए 100/60 का ये ड्राइंग है और इसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पे 2.5 यहाँ गिवन है। ओके, सॉलिड वर्क स्कीम पे आते से बनाना स्टार्ट करेंगे स्केच एंड देन प्लेन, और यहाँ पे मैं लेता हूँ टॉप प्लेन एंड ड्रॉ द कॉर्नर रेक्टेंगल। ओके, now right click and take smart dimensions and then 100. Okay, 160. Now okay, right click, extruded boss base and then give the thickness 10, यहाँ पे 10 and then okay. Okay, so I hope you clear हो with now features and then यहाँ पे यूज करेंगे हम सेल एंड सेल द बॉडी, और यहाँ पे जो थिकनेस देनी है हमें सेल की वो देनी है 2.5। ओके, नाउ ओके, ठीक है, तो ये सेल हो गया हमारा, बेस मॉडल यहाँ पे तैयार हो गया। देन राइट क्लिक एंड देन स्केच। ओके, नाउ टेक द लाइन एंड ड्रॉ इट, और यू कैन आल्सो यूज कन्वर्ट एंटिटीज। ओके, convert these entities now and make chamfer 20 and then okay. Now select the 20/20 and here 20/20, same here and then okay. Now okay, then right click, extruded boss base and then select the contour and delete it and select the area this। ओके, तो हमें इसको ही एक्सट्रूडेड बॉस बेस करना है। देन अगेन देखिए यहाँ पे थोड़ा से इसकी जो हाइट है यहाँ से देखिए 2.5 यहाँ पे गिवन है, देन 2.5 से जो टोटल हाइट है इसकी यहाँ पे 22.5 है एंड देन टोटल जो है 25 है, तो यहाँ पे जो इसको हाइट देंगे हम यहाँ पे 22.5 एंड सेलेक्ट इट एट 22.5। ओके, नाउ एंड ओके, सो आई होप कि क्लियर हुआ हो ये, ठीक। Then again right click and appearance, right click and appearance part and give the color, so I give this and then okay. Now यहाँ पे file and then save the model। okay, file and save and file, make drawing from parts, browse and select a standard sheet। okay, now plot it। इसमें जो व्यूज आप शो करेंगे वो देखिए यहाँ पे ड्राइंग एंड देन मॉडल, दो लेफ्ट क्लिक ऑन इट और प्रीव्यू आपको ऑन रखना है यहाँ से, जो व्यू आपको शो हो, ठीक है। एंड देन फ्रंट व्यू और इसका ये आइसोमेट्रिक व्यू शेडेड विद एज। ओके, लेफ्ट क्लिक एंड देन ओके, देन या नाउ एनोटेशन, इसमें डायमेंशंस लगाएंगे इंटायर मॉडल एंड देन इंपोर्ट। ओके, सिंपल 22 point and then this। okay, now या आई होप क्लियर हुआ हो। इसकी फाइल एंड देन सेव एज टाइप यहाँ चूज कीजिए एडोबी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ एंड देन सेव इट, तो पीडीएफ जनरेट कर देगा एंड देन प्रिंट इट। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और सीरीज को फॉलो करें। थैंक यू।